हाय पिला माने वेलकम टू माय चैनल प्रज्ञा स्टडी जोन। पिला माने आज आमे अष्टम श्रेणी रो इंग्लिश बुक रो सेकंड चैप्टर द कॉन्क्रीट एग्जांपल रो समस्त क्वेश्चन आंसर को देखिबा। एठी लिखि छि लेट अस डिस्कस। नेक्स्ट देखो लिखिला कंप्लीट द फॉलोइंग समरी विथ एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। Share your answers with your classmates and teacher. देखो नेक्स्ट लिखी द पोएम डिस्क्राइब्स मिसेस जोन्स द स्पीकर्स नेक्स्ट डोर नेबर हु हैज ए यूनिक गार्डन फिल्ड विथ डेज। आंसर लिखिब स्टोन्स। बुझिल स्टोन्स अर्थ पत्थर। Her garden includes a peculiar answer लिखिब path रास्ता, a pond and a rockery along with an unusual sundial सूर्य रश्मि that she finds charming. Mrs. Jones plants teeny delicate plants between the stones which speaker thinks must be so small that they are planted with a dash लिखिदेव pin। बुझिल। नेक्स्ट देख one day Mrs. Jones invites the speaker to see her garden and they discuss a dash। आंसर लिखिब flower that Mrs. Jones treasures। when the speaker asks where the answer of lovely flower is, Mrs. Jones says that the speaker has been dash। आंसर लिखिब standing in for a long। शुण पिला माने जदि मो चैनल को नुआ करी आछंती ताले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक कर नियंतु जहा द्वारा मो समस्त वीडियो आपन पाखरे पहुंच परिबो। बिटू रे लिखिला सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक नंबर रे लिखिला द टोन ऑफ द पोएम इज डैश। आंसर जब पिला माने देखो चारोटी ऑप्शन देछि से चारोटी ऑप्शन मध्यरु हमरा ऑप्शन डी डी ठीक आंसर हबो। बिट 2 बिट 4 एंड बिट 5। बुझिल ता पाखरे गोटे टिक चिन्हटिए दे दियो। ए बिट 2 बिट 4 एंड बिट 5 ए सब हमरा ठीक आंसर हे जिवो। बुझिल। तार नेक्स्ट देखिबा। देखो पिला माने सेकंड नंबर द स्पीकर इन द पोएम इज डैश। एही कविताटी रो लेखक किए। आंसर हे जिवो पिला माने द पोएट। बुझिल ता पाखरे गोटे टिक चिन्हटिए दे दियो। नेक्स्ट देखिबा चलो 3 नंबर The rhyme scheme of the poem is dash। आंसर जब पिला माने ऑप्शन 1 A B B and C C ता पाखरे गोटे टिक चिन्हटिए दे दियो। नेक्स्ट देखिबा चलो बिट 3 देला कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखो ब्रैकेट्स रे हमको ऑप्शन देछि द पोएट यूजेस द वर्ड स्टोन्स माने पत्थर इन ऑल स्टैंजास इन ऑर्डर टू एम्फसाइज हेयर डैश। आंसर जब पिला माने ऑब्सेशन विथ ए स्टोनी गार्डन। बुझिल सेटा हे जब हमर ठीक आंसर ता तळे गार दे दियो। सेकंड नंबर देखो द पोएट uses imaginary to describe the features of the garden that help readers dash। आंसर देखो पिला माने दुईटी ऑप्शन मध्यरु विजुअलाइज द गार्डन्स पेक्युलियर नेचर एटा ठीक आंसर हे जिवो। बुझिल। नेक्स्ट देखो बिट 4 आइडेंटिफाई द लाइन दैट इज रिपीटेड इन द पोएम इन ईच स्टैंजा। आंसर हे जिवो पिला माने माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स। एही शब्दटी आम कविता रे बारंबार रिपीट होइछि। बिट 5 देखो इन दिस पोएम देयर आर सम लेटर्स और साउंड्स at the beginning of words that are close together। Identify those words and phrases from the poem and give examples। आंसर लिखि नब नेक्स्ट डोर नेबर से देखो फास्ट लेटर आमर एन रे उच्चारण होउची। सेकंड देखो पुट्स लिटिल प्लांट्स तार लेटर टी पी रो स्टार्ट होउची। क्वाइट ए क्वार्टर ऑफ एन आवर तार लेटर टी क्यू रो स्टार्ट होउची।
नेक्स्ट देखो बिट 6 मिसेस जोन्स एक्साइटमेंट अबाउट हेयर गार्डन कंट्रास्ट with the speaker's disappointment on how ordinary it is. Find out the line which explains this ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କବିତାଟିରେ ଲେଖକ କେଉଁଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିସେସ୍ ଜୋନ୍ସଙ୍କର ଯେଉଁ ବଗିଚାଟା ଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ସାଧାରଣ ଥିଲା ଏପରି କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇନି ତେଣୁ ସେଠି ଲେଖିନେବ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ମିନ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ବୁଝିଲ 7 ନମ୍ବର ଦେଖ complete the following sentences with appropriate words given in the brackets देखो ब्रैकेट्स हम ऑप्शन देछि बाछि लिखिबा the odd एठी पिला माने word हबा WORD concrete refers to days in Mrs Jones garden आंसर हेजिबो पिला माने स्पेसिफिक ता चारि पटे एमिति गोल बुले दियो नेक्स्ट देखो 2 नंबर The title has a symbolic meaning as the poem provides a clear or concrete example of Mrs. Jones' days, gardening's habits. आंसर जो पिलामाने पेक्यूलियर बुझिलो ता चारिपटे एमिति राउंड बुलेई दियो नेक्स्ट देखो लिखिछि लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट देखो एठी लिखिला रीड द गिवन extract the answer the questions that follow एक नंबर लिखिला my next door neighbor Mrs. Jones has got a garden full of stones a crazy path a lily pond a rockery and a just beyond a sundial with a strange device which Mrs. Jones thinks rather nice. एठी बिट 1 रे लिखिछि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स आर अर्थ होची मिसेस जोन्स को बगीचाटी पत्थर रे भरिथिबा बोली वर्णना करा जायछि एथिरु तांकर बगीचा करिबार रुचि विषय रे तुमे कोन भाबुछ आंसर लिखि दबो मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स शी लाइक्स टू हैव लिटिल स्टोन्स इन हर गार्डन आर अर्थ होची मिसेस जोन्स को बगीचा करिबार रुचि अन्य मानक ठार भिन्न से निज बगीचा रे छोट छोट पत्थर रखिबाकू पसंद करंती बिटूरे लिखिबो आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स सत किंबा मिछ लिखिबाकू देछि द गार्डन serves as a means to reveal more about Mrs. Jones herself आर अर्थ होछि पिला माने बगीचाटी निजे मिसेस जोन्स को विषय रे अधिक किछि जानिबार एक माध्यम भाबे काम करे हाँ एटा ठीक अटे तेणु एटी पिला माने ट्री बोली लिखि नब बुझिलो बिट 3 देखो व्हाट डू यू मीन बाय क्रेजी पथ आर अर्थ होची क्रेजी पथ बोली कहले तुमे कोन बुझुछ आंसर क्रेजी पथ इज ए हार्ड सरफेस पथ मेड विथ ब्रोकन पीसेस ऑफ स्टोन्स तार अर्थ होची क्रेजी पथ हेउची भंगा पत्थर खंड को व्यवहार करी तैयारी होइथिबा एक कठिन रास्ता देख पिला माने बिट 4 लिखिला व्हाट डज द सनडाइल विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस सजेस्ट अबाउट मिसेस जोन्स पर्सनालिटी स्ट्रेंज डिवाइस बा सनडाइल बा सूर्य घड़ी मिसेस जोन्स को व्यक्तित्व विषय कौन सूचना दिए आंसर जीव ऑप्शन ए सी हैज ए फैसिनेशन विथ अनयूजुअल आइटम्स से असाधारण जिनिस प्रति आकर्षित अटंती बुझिलो नेक्स्ट देख बिटूरे लिखिला आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस एक नंबर लिखिछि हाउ डज मिसेस जोन्स फील अबाउट हेयर गार्डन सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जांपल फ्रॉम द पोएम आर अर्थ होछि श्रीमती जोन्स तांको बगीचा विषय रे किपरि अनुभव करंती कवितार उदाहरण दे निज उत्तर को समर्थन कर आंसर लिखिबो मिसेस जोन्स फील्स दैट हेयर गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल द लाइन व्हिच मिसेस जोन्स थिंक्स रादर नाइस सपोर्ट दिस आंसर
अर्थ होची श्रीमती जोन्स तांका बगीचाकू बहुत सुंदर बोली भाबंती हुईच मिसेस जोन्स थिंक्स रादर नाइस एही धाड़ीटी उत्तर को समर्थन करे बुझिल नेक्स्ट देखा चल देख पिला मैंने सेकेंड नंबर देछि व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर डिस्क्राइब्स द प्लांट्स एज being so small that they could be planted with a pin आर अर्थ होची बक्ता गछ गुड़िकु एते छोट बोली काहेंगे वर्णना करछंती जे सेगुड़िकु गोटिए पिन रे लगा जाई परिबा बोली आंसर लिखिबो द स्पीकर डिस्क्राइब्स द प्लांट्स एज वेरी स्मॉल humorously he thinks that these tiny plants were not significant and that Mrs. Jones would have taken great pains to plant them among stones आर अर्थ होची पिला माने बक्ता हासात्मक भाବରେ गछ गुड़िक बहुत छोट बोली वर्णना करछंती तांका मतरे एही छोट गछ गुड़िक विशेष गुरुत्वपूर्ण नथिला एवं पथर मध्य से गुड़िक लगाइबा पई श्रीमती जोन्स बहुत परिश्रम करथिबे तेणु से एही परी कहिसंती नेक्स्ट देखो पिला माने 3 नंबर व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट मिसेस जोन्स based on her gardening style and her interaction with the speaker आर अर्थ होची तांका बगीचा करिबार शैली एवं वक्तांक सहित तांकर व्यवहार को आमे श्रीमती जोन्स के विषय रे कोन जानि पारू आंसर लिखिबो Based on Mrs. Jones' gardening style and her interaction with her speaker, we get to know that she is very proud of her garden. She is contented with her unique taste. She invites the speaker to go around her garden, hoping that he would appreciate her taste and ovations. आर अर्थ होची पिला माने मिसेस जोन्स बगीचा करिबार शैली एवं वक्तांक सहित तांका व्यवहाररू जना पड़े जे से निज बगीचा पई बहुत गर्वित थिले से निजर विशेष रुचि रे संतुष्ट से वक्ता को निज बगीचा बुली देखेबा को डाकंती एवं आशा करंती जे वक्ता तांका रुचि और आग्रह को बहुत प्रशंसा करिवे 4 नंबर देख द पोएम पत्राश मिसेस जोन्स इन ए पॉजिटिव लाइट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट आर अर्थ होची कवितारे श्रीमती जोन्स को एक सकारात्मक चरित्र भाव में दर्शा जाइछि एही कथा को समर्थन कर आंसर पिला माने लिखिबो द पोएम portrays मिसेस जोन्स इन ए पॉजिटिव लाइट she has a unique taste and is quite confident about it her passion for gardening is praiseworthy आर अर्थ होची पिला माने कवितारे श्रीमती जोन्स को एक सकारात्मक चरित्र भाव में दर्शा जाइछि तांकर एक विशेष रुचि अछि एवं से सही रुचि विषय रे बहुत आत्मविश्वासी बगीचा करबा प्रति तांकर आग्रह प्रशंसा योग्य अटे बुझिलो चलो नेक्स्ट देखिबा 5 नंबर व्हाट डज द पोएम टेल अस अबाउट द वे people think differently about the world around them कविताटी आम चारिपाखे थिबा दुनिया विषय रे लोक माने किपरि भिन्न भिन्न भाव चिंता करती से विषय रे आमको कौन कहूछि आंसर अबाउट द वे पीपल थिंक्स डिफरेंटली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम द पोएम टेल्स अस दैट वी शुड पे रेस्पेक्ट टू द वेरिड व्यूज ऑफ पीपल ऑन गार्डनिंग डिस्पाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर समवन मे नॉट कैच द अटेंशन ऑफ समवन एल्स आर अर्थ होची लोक माने निज चारिपाखे थिबा दुनिया विषय रे भिन्न भिन्न भावर भाबंती कविताटी आमको सिखाए जे अन्य मानकर भिन्न मत और दृष्टिकोण को आमको सम्मान देबा उचित देखो एठी लिखिला लेट अस लर्न सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन्ड वर्ड इन द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एक नंबर रे लिखिला ए सनडाइल विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस आर आंसरटी हेचुआ पिला माने पेक्यूलियर बुझिलो नेक्स्ट देखो सेकेंड नंबर डेज व्हिच मिसेस जोन्स थिंक्स रादर नाइस आर आंसरटी हेचुआ पिला माने चार्मिंग बुझिलो चार्मिंग चारिपटे एमिति राउंड बुले दियो नेक्स्ट देखो 3 नंबर
दे आर सो डेलिकेट आर आंसरटी हो पिला माने फ्राजिल फ्राजिल चारिपटे एमती गोल बुले दियो नेक्स्ट देखिबा 4 नंबर where is this lovely thing I cried आर आंसरटी हो पिला माने exclaimed बुझिलो exclaimed चारिपटे एमती राउंड बुले दियो चलो नेक्स्ट देखिबा जहाँ अबुझा रहुछि मते कमेंट करी जणाइबे बुझिले नेक्स्ट देखो सेकंड बिट लिखिला द सनडाइल इज रिफर्ड टू एज ए डिवाइस इन द पोएम work in pairs to infer the meaning of device share your thoughts with your classmates and teachers next देखो now match the type of instruments in column 1 with their definitions in column 2 देख डेफिनेशन गुड़ को आम कलम 2 रे लिखी इंस्ट्रूमेंट्स गुड़ को कलम 1 रे लिखी कलम 3 shows one example of each type of instruments and more example in column 3 कलम 1 को देखिबा कलम 2 को लिखिबा तापर आमे कलम 3 को गार दे जोड़िबा एठी लिखिला कलम 1 कलम 2 एंड कलम 3 एक नंबर रे लिखि देख इम्प्लीमेंट देख इम्प्लीमेंट लिखी इम्प्लीमेंट पिला माने देख कलम 2 रो केउठी के आमे गाटाणी जोड़िबा आंसर टी हेजबा पिला माने बिट 5 एठी गाटाणी जोड़िबो एठी देख लिखी समथिंग यूज्ड बाय हैंड टू मेक योर रिपेयर आमे रिपेयर करबा को ताको व्यवहार करंती आंसर हेजबो कोन पिला माने हैमर हातुड़ी बुझिलो ना ताको आमे घर मरामती करिबारे व्यवहार करछंती नेक्स्ट देख सेकंड नंबर टूल लिखिबो पिला माने आर आंसर टी हेजबो बिट 3 समथिंग दैट वर्क्स ऑन बीइंग मूव्ड बाय हैंड जे कौन से गोटे जिनस अछि जहा को कि हमें हाथ को मूव करबा द्वारा से काम करूछि आंसर हेजबो स्पेड एंड नाइफ छुरी बुझिलो नेक्स्ट देखो 3 नंबर इक्विपमेंट लिखिछि तार आंसर टी हेजबो पिला माने देखो बिट 4 हैला ए सेट ऑफ नेसेसरी आइटम्स फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज आर आंसर टी हेजबो पिला माने देखो क्रिकेट बैट हेलमेट एंड बैटिंग ग्लोव्स एटसेट्रा बुझलो एठी की गारटाणी की जोड़ नबो देखो 4 नंबर लिखिला एफ्लुएंस आको देखो पिला माने गारटाणी जोड़िबो कोठी की बिट 1 को टाणी नबो सेठी देखो लिखिछि समथिंग दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इज यूज्ड टू डू वर्क इन द हाउस ताको आमे घर काम रे व्यवहार करूछंती से गोटे इलेक्ट्रिक सामान अटे आंसर टी हेजबो पिला माने मिक्सर ग्राइंडर बुझिलो जहा को आमे घर मध्ये व्यवहार करूछंती देखो एठी 5 नंबर लिखिला गॉर्जेट को पिला माने बिट 2 को गारटाणी करी जोड़ी दबो देखो एठी लिखिछि समथिंग स्मॉल दैट इज मेकानिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से गोटे छोट जिनस अटे मेकानिकल जहाँकि जंत्रपाति मध्य अटे इलेक्ट्रिक सामान अटे से होछि कोन मोबाइल फोन एंड लैपटॉप जहाँ को कि आमे हाथ रे व्यवहार करथौ बुझिलो नेक्स्ट देखबा चलो देखो पिला माने बिट 3 complete the table by making new words in column 1 using the hints given in column 2 replace the first letter of the given word to create new words one example has been done for you पिला माने देखो एठी बॉक्स लिखला कॉलम 1 सेकेंड लिखिछि कॉलम 2 देखो एठी लिखिछि नाइस आर समधर्मी उच्चारण शब्द गुड़ को नहीं आमे लिखिबा कट इनटू स्मॉल पीसेस तार आंसर टी हेजबो डाइस सेमी देखो पिला माने बिट 2 रे हमर लिखिछि हिंट कोन देछि ग्रेन दैट वी कुक एक प्रकार शस्य जहा को आमे रोसे करू आंसर टी हेजबो पिला माने राइस एठी लिखि दबो आर आई सी ई राइस अर्थ चाउल बुझिलो नेक्स्ट देखो प्लुराल ऑफ माउस मूसार बहुवचन कौन हेजबो पिला माने माउस रो बहुवचन हबो माइस एम आई सी ई माइस बोली एठी लिखि नबो
तापर देख बिट 4 बैड हैबिट खराब अभ्यास कौन आंसर लिखि नब भाइस VICE भाइस बुझिल चलो नेक्स्ट देखा देख पिला माने एठी कॉलम 1 लिखिछि एपटे मध्ये लिखिछि कॉलम 2 एठी लिखिला सॉइल हम ऊपर जेपरि करले एहाकु मध्ये सेपरि करबा सॉइल रो समोच्चारण शब्द गुडी को नेगी लिखिबा हीट समथिंग गरम अटे कोन अटे आंसर लिखिलबा बॉईल आमे जहाकु मध्ये बॉईल करले से गरम हुए नेक्स्ट देखो बिट्टू रे लिखिला वर्क वेरी हार्ड कठिन परिश्रम आंसर लिखिलबा टॉयल TOIL टॉयल बोली लिखिब देख बिट 3 रे लिखिला लेंथ ऑफ वायर इन सर्कल वायर मध्य सर्कल होइकी रही थाए आंसर लिखिदब पिला माने कॉइल COIL वायर मध्य कॉइल थाए नेक्स्ट देख बिट 4 रे लिखिला सीड्स टू रॉ फूड आइटम्स आंसर लिखिनब पिला माने फॉइल FOIL फॉइल बोली एठी लिखिनब बुझिलो चलो नेक्स्ट देखबा देखो एठी लिखिला लेट अस लिसन बिट 1 रे लिखिछि यू विल लिसन टू ए प्रेजेंटेशन अबाउट द वंडरफुल रॉक गार्डन ऑफ छत्तीसगढ़ एज यू लिसन answer the following questions using 1 to 3 exact words from the presentation transcription for teacher on page 47 देख पिला माने एडे होचे हमर ट्रांसक्रिप्शन अटे याकू भल भाबरे पढ़िकी से समस्त क्वेश्चन रो आंसर गुडी को आमे लिखि नबा बुझिलो मन ध्यान देकी गुडी को पढ़िकी बुझि नबा नेक्स्ट को चलो देख पिला माने एक नंबर लिखिला वेयर वाज नेक्चांस रॉक गार्डन फीचरेड आर अर्थ होछि पिला माने नेकचांद को रॉक गार्डन केउठारे प्रदर्शित होइथिला आंसर लिखिन हबो नेकचांस रॉक गार्डन वाज फीचरेड ऑन एन इंडियन पोस्टेज स्टैम्प बुझिलो आर अर्थ होछि नेकचांद को रॉक गार्डन एक भारतीय डाक टिकट रे स्थान पाइथिला सेकंड नंबर देखो What kind of sculptures does the rock garden have आर अर्थ होछि पिला माने रॉक गार्डन रे केउ प्रकार मूर्ति रहिछि आंसर लिखिबो द रॉक गार्डन इज सेवरल कलरफुल स्कल्पचर्स एंड मोजाइक ऑफ आर्ट पीसेस आर अर्थ होछि रॉक गार्डन रे अनेक रंगीन मूर्ति एवं विभिन्न कलाकृतिर मोजाइक मध्य रहिछि नेक्स्ट देखो 3 नंबर हाउ इज द रॉक गार्डन डिवाइडेड आर अर्थ होछि रॉक गार्डन टी किपर विभक्त होइछि आंसर द रॉक गार्डन इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट फेजेस अर्थ होछि रॉक गार्डन टी तीनोटी स्वतंत्र पर्याय रे विभक्त होइछि बुझिलो नेक्स्ट देखिबा 4 नंबर नेम एनी वन थिंग दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्मड इनटू ए पीस ऑफ आर्ट इन दी रॉक गार्डन आर अर्थ होछि पिला माने रॉक गार्डन रे कलाकृति रे परिणत करा जायथिबा जे कोनसी गोटे जिनसर नाम लेख आंसर लिखिबो टेराकोटा पॉट इज ए थिंग दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्मड इनटू ए पीस ऑफ आर्ट इन दी रॉक गार्डन आर अर्थ होछि टेराकोटा पात्र एक जिनिस जहाकू रॉक गार्डन रे एक कलाकृति रे परिणत करा जायछि 5 नंबर देखो approximately how many statues border the rock garden आर अर्थ होछि प्राय केतोटी मूर्ति रॉक गार्डन रो चारि पाखरे रहिछि आंसर लिखिबो approximately 5000 statues border the rock garden प्राय 5000 टी मूर्ति रॉक गार्डन रो चारि पाखरे रहिछि बुझिलो नेक्स्ट देखो एठी लिखिछि लेट अस राइट You are a member of the nature club of your school. Draft a notice informing the students of grades 6 to 8 about the inauguration of the herb garden. तले देख लिखिछि points to remember. तापर देख लिखिछि देखो एठी लिखिला mention the purpose of writing date time, venue and any other relevant information
whom to contact when and where। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତାରିଖ ସମୟ ରାଇଟିଂ ଭେନ୍ୟୁ ଏସବୁ କିଛି ଆଉ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବ। ଦେଖ ୟୁଜ୍ ଫର୍ମାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନ୍ ଦି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଫର୍ମ। ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ଫର୍ମାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ରାଇଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଇନ୍ ଏ ବକ୍ସ। ଏ ବକ୍ସରେ ନୋଟିସ୍କୁ ଲେଖିନେବା। ବୁଝିଲ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଲେଖିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲେଖିଲା ନୋଟିସ୍। ନୋଟିସ୍ ଲେଖିବ। टाइटल को विषय लिखुछ ता टाइटल लिखि नब। डेट लिखिब। निजर नेम लिखिब। सिग्नेचर पकेब। क्लास लिखिब। बुझिल देख पिला माने नोटिस लिखि नब। फास्ट एठी लिखिब नेचुरल क्लब। नेक्स्ट देख लिखिब योर स्कूल नेम। निज निजर स्कूल नेम को एठी लिखि नब। नोटिस बोली ता तळे लिखि दब। तापर देख नेक्स्ट एठी लिखिब डेट। जो तारीख लिखुछ से डेट टी पकई देब। तापर लिखिब इनगोरेशन ऑफ दी हर्ब गार्डन। बुझिल नेक्स्ट देख ता तळे लिखि नब ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to grade 8 of the school are hereby informed that a herb garden of the school will be inaugurated on तापर लिखिब 16th July 2025 at 10 am। As for the venue, it has been decided that the new herbal garden will be located on the westland of the school adjacent to the existing school garden। The program is going to be organized by the nature club। All students should witness the inauguration program and learn about the usefulness of herbs। बुझिल एतिकी लिखि नब। तापर लिखिब let us make the program ए ग्रांड सक्सेस। देख एठी योर नेम लिखिछि। ता पाखरे तुमे तुम निज नाम लिखिदेब। ता सहित तुम क्लास मध्ये पिला माने लिखि नब। तापर लिखिब मेंबर ऑफ द नेचर क्लब। बुझिल चलो नेक्स्ट देखिबा। एठी लिखिछि लेट अस एक्सप्लोर। पिला माने एठी जहा मध्ये किछि लिखाइछि ए सब पिला माने तुमे निजे ही करिवो। बुझिल ना एटा निजे तुमे माने ही करनब। तो चलो आमे नेक्स्ट देखिबा। देखो पिला माने एठी हमर दी कंक्रीट एग्जांपल रो समस्त क्वेश्चन आंसर गुडी को शेष हो जाईछि। वीडियो टी किपर लागिला मते कमेंट करी जणाइबे। जदी भल लागिछि ता लाइक करनेबे। आपण समस्त सांगवान बाकू को शेयर करनेबे। सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी क्लिक करनेबे। थैंक यू फॉर वाचिंग पिला माने।